हाँ ठीक है, very good. So in the last lecture, we were doing the application of electrochemical series, and I hope you guys have at least tried to memorize the electrochemical series, right? Everyone? Yes, Rajita, Safia, Fadil, Deborah. Yes, sir. Yes, okay. So I think how many applications did we do? Can you please tell me? Sir, we did 2 applications, sir. We have done two. So now we are having what? What were the application did we do? We did displacing and oxidizing and reducing. ठीक है, displacing power and oxidizing and reducing agent all about हम लोगों ने किया था. Write the third application. Reduction of anode and cathode. Reduction of anode and cathode. ठीक है. Just थोड़ा सा आप लोग को हम याद दिला दें that we have the electrochemical series, and in this electrochemical series, basically we are going to divide it into a few segments. We have the barat elements, and then we have the brush elements, right? After that we have the ruxati elements, then we have hydrogen which is equal to 0, and then we have the chapa elements, right? So these are the different elements that we have. So from here to here, all of these are also known as wedding elements, or इनको हम chapa elements बोलते हैं. ठीक है. So those who were present in the last lecture, they would understand what I am saying. Whether it's okay, fine. Mir Hussain is here. Assalamu alaikum, Mir. How are you? Yes, Hussain, am I audible? Please write. So for the prediction of cathode and anode, so you will first of all predict what is the cathode. Okay. So please देखें यहाँ पे. So what will be the cathode? Cathode is something that is having the electrode with higher SRP will be what? The electrode with higher SRP will be cathode. We have seen this previously, right? यहाँ पे देखिए guys, you will write electrode with, cathode is the electrode with higher SRP. ठीक है. What does it mean? It means lower in the electrochemical series. Lower in electrochemical series. ठीक है. So we know that all of these are what? This is negative, and the chapa elements, these are having positive electrode potential values, right? This is positive. So जितना नीचे होगा, that means नीचे की तरफ जाएंगे छापा की तरफ, we are going to have a higher reduction potential, and that is why they will be preferred at cathode. Similarly, anode पे कौन होगा? Anode, they have electrode with lower SRP, meaning they will be higher in electrochemical series. They will be higher in electrochemical series. Now you guys will write a question, predict anode and cathode. Predict anode and cathode. All of you done writing this prediction of anode and cathode? सवाल start करें? हाँ guys. See,
Right question, predict anode and cathode. That if we are using zinc, and let us suppose we are having number one, zinc and copper. So what will be at electrode? What will be at anode and what will be at cathode? So tell me, zinc and copper. इसमें बताइए which is lower in the electrochemical series. Tell me guys. Zinc कहाँ पे आता है? कौन सा एलिमेंट है? पहले बताइए, वेडिंग है या छापा है? Zinc is wedding or छापा? Wedding. Wedding. And copper is? Chapa. Chapa elements, right? So obviously chapa elements, they come lower, right? Yes or no? Chapa elements, they come lower. Yes, sir. तो ठीक है, तो पहले जो आ गया वो एनोड हो जाएगा, बाद में जो आ रहा है वो क्या हो जाएगा? दैट विल बी कैथोड. So in this case, anode is going to be zinc and cathode is going to be copper. And I'm writing some, and you will just write what is anode and cathode. Okay, you have nickel and Ag. But please tukka na mare, you can refer the electrochemical series or try to remember first. Wedding hai ya chapa hai. If both are wedding elements, then you will see whether it is the barat element, the brush elements, or the they are barat element, brush element, or the rukhsati elements है ना. उस हिसाब से फिर आप लोग कम से कम करते जाइएगा. Pb, and then you have zinc. Fourth लिखिएगा. Let us suppose you have cadmium and lead. Fifth में कीजिएगा barium and aluminium. Sixth में आप लोग रखिए magnesium and manganese. चलिए. Please send your answer if you're done, guys. So you have sent. Actually, just received it. Okay. Nickel AG1 is correct. Rachita, looking at your answers, okay? Zn, and you have PB and Zn. ठीक है, it's correct.
cadmium and Pv. Okay, correct, very good. Barium, aluminum, correct. Magnesium and magnesium also correct. Very good. Your answers are right, Prachita. Deborah, looking at your answers. Nickel Ag is correct. Pp and Zn is also correct. Cadmium Pb is also correct. Yeah, very good. So here, Deborah. Sia, looking at your answers now. Oh, you know, like this. Okay. Nickel and Ag correct. Pb and Zn correct. Cd and Pb correct. Barium and aluminium, it is also correct. Magnesium and manganese is also correct. Very good. Fadil. Zinc and copper is correct. Nickel and Ag is correct. Z, Pv and Zn is also correct. Cd and Pb is correct. Okay, very good. Fadil correct. Very good. We are looking at your answers now. Zinc and copper is correct. Zinc and copper is correct. Nickel and Ag is correct. Lead and zinc is also correct. Cadmium, Pb, barium, aluminium. Barium and aluminium is not correct, I guess. Yes, Priya. Barium and aluminium leke barat. Barat comes before, right? So anode ho jayega barat, right? Yeah. Yes, it should be opposite, but just a minute, Tell sir. me. BA. BA is barat element. No, barat. Leke barat kana maze se aaya. Aya is aluminium. Sir, why it's not correct? Which is having higher which is higher in the series, tell me, Priya, कौन सा ऊपर है? कौन पहले आ रहा है? एल्यूमिनियम पहले आ रहा है, बेरियम पहले आ रहा है? In the series. Sir, aluminium and barium lie at the same line, and you No. said like downwards it increases more. आप पढ़िए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़िए. सबसे पहले कौन सा एलिमेंट है? व्हाट इज द फर्स्ट एलिमेंट? Lithium. फिर go on. Yes, sir. Go on. Lithium. After that, what? Yeah. Lithium, potassium, barium, calcium, potassium. sodium. So this is coming higher up in the series, right? ये पहले आ रहा है. Yeah. Got it? Even though both of these are barat elements, but in those thing also barium is coming before aluminium, right? I hope you got it. Yes or no? Yes, sir, but I think you have drawn an arrow mark downwards. I thought it's increasing downwards. No, like while explaining you draw. After that, I don't know. ये तो ऐसे ही तो है भाई. ये पहले ऐसे आएगा ना, तो हमने ऐसे किया था. हाँ. What happened then? So it's It is decreasing. Increasing only downwards. Increase. You mean by अच्छा हाँ ठीक है. Yeah, it is correct. SRP is increasing downwards. The SRP is increasing downward. The SRP will be increasing. तभी तो ये negative है. Most negative is this one. Then we have hydrogen zero. क्या confusion है? Yeah. Okay, sir. I got confused with that arrow mark, sir. Sorry. Which arrow mark? The one I draw right now. No. The arrow mark, I thought it's for increasing, decreasing. I did not think about SRP. Write the next fourth one. Used to predict. It is used to predict feasibility of reaction. It is used to predict feasibility of a reaction.
आप लोगों ने देखा होगा इस तरह के सवाल आ जाते हैं आपके पास, that if you have copper CuSO4 plus Ag, CuSO4 plus Ag, don't write this, okay? Please see, gives Ag2SO4 plus copper. Is this reaction possible or not? Have you seen, कभी आपने देखा इस तरह के सवाल आएंगे, ठीक ना? That is this reaction possible or it is not possible, है ना? Comment whether this reaction is possible or not possible. तो बच्चों का दिमाग में जानते क्या चलता है? They are like, oh my god, तो पूरा सारा दुनिया भर में जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं सब याद करके रखे क्या हम? है ना? If they directly ask you whether this reaction is possible or not possible, then सबसे पहले दिमाग में तो ये आएगा, that should I remember all the reactions which are possible or what? So the answer is no. Basically, what you have to do in these type of reaction, you have to see what is getting oxidized and what is getting reduced. Okay. So if you see copper here, copper it is in +2 state and copper is getting to the 0 state. Correct? Yes or no? So what we can say about copper, what is happening to copper? Copper is getting oxidized or reduced? Reduced. Reduced, There sir. Can you guys speak once again? Reduced. Reduced, very good. So reduction is happening here. Okay. And what about Ag? Ag is going from, it is 0 right now. And it is going to +1 state. Oxidized, sir. It is getting oxidized. Now, according to reaction, ध्यान दीजिए, all of you guys, please. This is according to reaction. Copper is getting reduced, then obviously speaking, the SRP की अगर हम बात करें, according to reaction, if I talk about the SRP, if I'm talking about SRP, then the reduction potential of copper should be greater than that of silver. Yes or no? Please tell me, guys. Yes, sir. Because in the presence of Ag is there, Ag is getting oxidized and copper is getting reduced. So obviously we can say that the reduction potential of copper wants to be getting reduced. That is why its reduction potential is greater than Ag. This is according to the reaction. Now you will tell me, according to the electrochemical series, what is the SRP? Which is greater, copper or Ag? Look at the electrochemical series and tell me. Ag. Ag, छापा, है ना? छापा के हिसाब से देखिए, Ag is there ना? छापा. Right, so obviously we have copper here and we have silver here. So Ag is having higher reduction potential than copper. So according to the electrochemical series, copper का जो reduction potential है, it is lesser than that of Ag. That is why I will say that since the factual thing is not in accordance with the reaction, है ना? तो reaction जो reality को नहीं बता रहा, that is why this reaction will not take place. क्या आपको समझ में आया कैसे करना है ये सारे सवाल? सोनो प्लीज टेल मी. ठीक है? Got it now, all of you? Crystal clear? Okay, fine. So I'm writing a few reactions. You will look at the electrochemical series के हिसाब से, and you will write according to the reaction what is the SRP. You will write according to the electrochemical series what is the SRP. If both of them matches, if both of these SRPs, the order, if they match, then what you have to do? You have to say that yeah, this reaction is possible. If they don't match, then what you will say? If they don't match, then what you will say? Tell me, guys. Not possible. The reaction is not possible. Okay. So Fe plus, I am writing some general equations. Copper 2 plus. अब देखिए, copper 2 plus की जगह आपको CuSO4 भी दे सकते, give you CuCl2 also. In copper sulfate and copper chloride, in both the cases, what is common? Copper 2 plus is common. So I am writing the generic cases. They can give you some specific cases also. But उसमें भी आपको बस ना reduction oxidation ही देखना है. आप उसी चीज का ख्याल रखिएगा. See here. Now what is happening? Let us suppose it is going to Fe2 plus and copper. The second equation, Zn2 plus Pb, giving you Pb2 plus Zn. Right, the third reaction, copper plus Zn2 plus is giving you zinc plus copper 2 plus. Right, the fourth reaction, 2Ag positive plus lead is giving you
2Ag plus Pb2 positive. Actually, do these questions. I'm giving you guys 2 minutes. No, I don't understand what we have to do. Sorry, what, Visita? I don't You did understand not. what we. No, What you need to do? yeah, like how do we? अरे, आपको ये आइडेंटिफाई करना है ऑक्सीडेशन किसका और रिडक्शन किसका हो रहा है. ठीक है. Okay, that's all. नहीं, नॉट दैट्स ऑल. फिर जिसका रिडक्शन हो रहा है उसके हिसाब से आप क्या लिखिएगा, उसकी एसआरपी ज्यादा होगी, है ना, अकॉर्डिंग टू रिएक्शन. देन यू विल लुक एट द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और वहां पे आप लिखिएगा कि एक्चुअली में एसआरपी किसकी ज्यादा है. इफ द एसआरपी according to reaction matches the SRP according to electrochemical series, then the reaction will occur, otherwise it will not occur. Got it, Rajita? Yes, sir, got it. Okay. अच्छा, लास्ट क्लास में आप लोगों ने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वाला किया होगा ना असेसमेंट. डज एनीवन रिमेंबर? इसको याद है? लास्ट क्लास में आपने असेसमेंट किसका किया था? किसी को नहीं याद क्या? रेफरेंस इलेक्ट्रोड वाज ना, ठीक है. Excuse me, sir. Yeah, tell me. Sir, the first one, the reaction is feasible, right? Why? Sir, क्योंकि according to the reaction, Cu का SRP will be more, right? And then according to electrochemical series B, it's the same. No. It's not. According to, no, it's not. Sir, हाँ जी, बताएं. I have a doubt yes, that sir. if हाँ जी, फादिल आपका क्लियर हो गया? Yes, I just looked at it. ओके, फिया जी बताएं. Sir, here we need to find out that according to reaction SRP and electrochemical series SRP, if they are both different, the reaction cannot occur. Like that? Yeah, the reaction will not occur. Okay, sir. Assalamu alaikum, Aliza, how are you? Walaikum assalam, sir. Sir, great. How are you? I'm good, alhamdulillah. Why are you late? Sir, I had to restart my laptop. तो उसमें Why? पानी सर क्योंकि जूम नहीं खुल रहा था. अच्छा. Okay, Fia, Fadil and Aliza. मीर हुसैन तो है नहीं क्लास में.
Guys, can you please turn your videos on? Please turn your videos on, or at Yes, least tell me what's happening. Yeah, thank you, Father. Safiya, I got your answer. Your answers are correct. अच्छा, okay, Fia. फोर्थ वाला, अच्छा फोर्थ वाला अलग से। ध्यान से कीजिए फिया, लास्ट वाला। आप हड़बड़ा जाते हैं आखिरी वाले सवाल में, लगता है। हाँ फिया, सी द लास्ट वन। Sir, can you repeat? सी द लास्ट वन, लास्ट वन। आखिरी वाला गलत है आपका। अरे फादिल भाई, आपने पूरा उल्टा किया हुआ है भाई, ठीक से करो, ठीक से करो, ठीक से। क्या चीज सर? According to electrochemical series, how you have written it? Can whose Fadil, which is have in the electrochemical series, which element has the least reduction potential? Tell me now. Which element has the least reduction potential? सबसे कम किसका है? Sorry sir. आवाज नहीं आ रही क्या? Can everyone listen to me? Hear me? Yes or no? Please tell me. Rachita, Safiya, am I audible? Yes, sir, you're audible. क्या हुआ फादिल? Is my voice not clear? It is clear. I'm asking, what is the element with least SRP, the least reduction potential, according to the electrochemical series? सबसे कम reduction potential किसका है? गोल्ड का सर। तो आपने उल्टा लिखा हुआ, कितना है? गोल्ड का पॉजिटिव में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है? क्या लिखा है आपने? पॉजिटिव में सर। तो कम कैसे हुआ? राइट। ठीक कीजिए आपने सारे सवाल। Rajata, I'm looking at your answer, just a second. अच्छा, आंसर 1। ओके, रचिता आपने भी उल्टा उल्टा किया हुआ लगता है। 1 मतलब कौन सा? मेरा वाला 1? हाँ 1। 1 आपने क्या लिखा हुआ है?
How, Rajita? Turn your mic on. Yes, sir. Fe का जो SRP होगा, it will be positive or negative? Negative. और कॉपर का? Positive. तो किसका ज्यादा हुआ? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मुताबिक, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज which is having higher SRP. Copper. Copper, sir. या फिर ठीक कीजिए जरा. Do it once again. Sir, is everything wrong? हाँ, सारा ठीक कीजिए. देखिए फिर सबको चेक कीजिए ना, कम से कम. At least check everything if it is correct or not. Same goes for Fadil. कितने लोगों ने आंसर किया अभी तक? सफिया एंड अलीजा को तो अभी नहीं आ रहा होगा. चलिए गाइस जल्दी कीजिए इसको जरा. गिविंग यू गाइस 1 मिनट मोर. फिर आप बताइएगा आंसर हमें. आप देख के करना, उल्टा उल्टा बस ये नहीं कर देना कि जहाँ नॉट फिजिबल वहां फिजिबल लिख दिया, जहाँ फिजिबल नॉट फिजिबल वहां फिजिबल लिख दिया. ठीक है ना, यू डोंट डू दैट. So one question: the SRP and the Indeed. reaction and the SRP and the electro series, right? It has to be the same as each other for the reaction to take place. Am I right? Reaction to Or- take place, right? हाँ. Yes. Yeah. ये देखिए ना, if it is different, we have seen ना in one of the cases, if it is different, this is different, right? So when it is different, it is not taking place. The reaction is not going to occur. I think Deborah, you have not sent the answer, no? Deborah? Yes, Ansha, you have just sent the answer. Sir, I can't find what is the problem in the last one. Just a second. नहीं यार, ये तुम लोग गलत कर रहे हो. ठीक है, all of you please turn your mic on. All of you please turn your mic on. रचिता, सफिया, डेबोरा, फादल, पिया. सफिया आप रहने दीजिए, आप मत ऑन कीजिए. यू कैन कीप इट ऑन. ठीक है. अलीजा आप ही ऑन करो, समझ में आ जाएगा आपको. अलीजा आप ऑन करो. ठीक है. बाकी सब लोग ठीक है. चल मी सब लोग बोले. ऑल ऑफ यू गाइस टेल मी, किसका रिडक्शन होता है पहले रिएक्शन में? व्हाट इज गेटिंग रिड्यूस्ड? Fe is getting reduced. व्हाट इज गेटिंग रिड्यूस्ड? रजिता? Fe. अरे भाई ऐसे तो भाई बहुत बर्बादी हो छा जाएगी. जीरो है. Yes, I'm so sorry. क्या है? Yes. Sorry. CU Copper is getting reduced. हाँ, Yes, CU is I'm getting sorry. reduced ना. Yes. Okay. So I will say that the SRP of copper, ये समझ में अरे लिखना नहीं है कुछ भी. फादिल कुछ लिख रहे हो आप? No, sir. आपका स्क्रीन पे रहना चाहिए चेहरा सर. ठीक है, यू डोंट हैव टू गो नीदर उधर कहीं भी. कॉपर sir. का क्या है, ज्यादा है किससे? Fe से. ठीक है. अब आपको ये देखना है, ये बता दो आप, जो पहले आ रहा है वो कम है. इसके SRP की बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में. If that is coming first, if that element is coming first in the series ना, तो वो आपका क्या हो जाएगा, उसका SRP कम है. जो जितनी दूर है, आई हैव सीन यार, ये थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर लो तुम लोग. ये पॉजिटिव होता है छापा वाला, राइट? तो छापा बाद में आता है ना. लेके बारात का आना मजे से आया, मंजन कल फेंक दे, कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी, हाइड्रोजन जीरो, फिर छापा. So अगर कोई पहले आ रहा है, if it is coming earlier then it is having lower SRP, if it is coming later on then it is having higher SRP. ठीक है. चलिए अब बताइए यहाँ पे इन द केस ऑफ कॉपर एंड Fe, ये तो बहुत आसान सा केस हो जाएगा ना भाई. बताओ कॉपर कौन सा एलिमेंट है, छापा या वेडिंग? कॉपर इज व्हाट एलिमेंट, छापा और वेडिंग एलिमेंट? छापा एलिमेंट, राइट? एंड Fe इज, Fe कौन सा एलिमेंट होता है? अरे माइक ऑन रखो भाई, माइक क्यों ऑफ हो रहा है सबका? व्हाट एलिमेंट Fe?
Breakfast. breakfast ब्रेकफास्ट यानी वेडिंग वाला हो गया ना फिर तो wedding one, तो yes, sir. छाप है ना, तो Yes, छापा इज लेटर ऑन, तो ऑब्वियसली कॉपर का जो एसआरपी होगा इट विल बी ग्रेटर देन एफई ना। अरे बोलो भाई, Yes, Yes, sir. sir. तो ये तो होगा, दिस रिएक्शन विल अकर, दिस रिएक्शन विल अकर। व्हाट अबाउट द But नेक्स्ट sir, केस, टेल मी। हाँ बोलो फादर। sir, this is what I asked, right? Initially, क्या? yeah, जब Sir. I asked पहला question I asked कि फिर the reaction will occur, and you asked why. फिर I said the same thing कि CU का पहले comes first. सीयू कैसे पहले आ रहा भाई? तुम सीयू कम्स फर्स्ट बोल रहे हो तुम। सीयू कम्स फर्स्ट, टेल मी। डज सीयू कम्स फर्स्ट? डज सीयू कम फर्स्ट, टेल मी। No, sir. तो क्या हमने कुछ गलत कहा, या आप अपने दिमाग में कुछ और सोच रहे थे, बोल कुछ और रहे थे? Yes, sir. You I were think. thinking something different, you were telling something different. तो हम तो I cannot judge ना कि आप क्या सोच रहे हो. I will say for the things that we are speaking, right? I completely understand. थोड़ी confusion हो सकती है कि चीज बाद में आ रही है और पॉजिटिव है, तो इट इज समथिंग लाइक नंबर लाइन ना। नंबर लाइन में पहले नेगेटिव्स आएंगे, उसके बाद पॉजिटिव्स आएंगे। वो आप लोगों को पढ़ाया पहले पॉजिटिव जाता है, तो इस वजह से आप लोगों को लगा पहले पॉजिटिव फिर उसके बाद नेगेटिव ज्यादा सही लॉजिकल ऑर्डर होगा, बट इट इज नॉट लाइक दैट ना। इफ यू सी अ नंबर लाइन, पहले क्या आएगा, नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, बताओ गाइस? Negative. Negative. Negative, then zero, then positive, right? तो negatives wedding element हाइड्रोजन जीरो एंड छापा, ठीक है। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, उसमें आपकी कोई गलती नहीं, हो जाता कभी कभी, ठीक है। Yes, sir. Now in the next case, tell me, किसके एसआरपी according to the reaction what is getting reduced? Zinc. 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 So I will write zinc has higher reduction potential than Pb, ठीक है। अब बताइए according to the electrochemical series कौन बाद में आ रहा है, ये बता दो आप पहले, कौन बाद में आ रहा है? PB. PB, sir. PB. पीबी ना, मंजन कर फेंक दे, उसके Yes. बाद कोई नहीं कहे सुंदरी प्यारे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग एसआरपी के केस में क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, दैट पीबी इज हैविंग हायर एसआरपी देन जिंक। क्या बोथ ऑफ दिस सेम, टेल मी, और डिफरेंट? No, Not different. डिफरेंट हो गया ना। तो अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, दिस रिएक्शन कैन नॉट टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। डेबोरा, व्हाट आर यू राइटिंग? Mic is off. Your mic is off. Sir, I wrote the SRP right, sir, for everything. नहीं, you are writing. No, I'm checking the answer. Sorry, I was checking the answer, sir. you're checking the answer. So, ठीक है. Tell me, guys, now in the third case, what is getting reduced? Zinc is getting. Think, sir. Zinc is getting reduced. Zinc का ज्यादा होगा किससे? कॉपर से। तो obviously this is not right because copper is छापा element, तो कॉपर का ज्यादा ही होगा zinc से। Zinc is a wedding element, right? So according to the electrochemical series, copper is having greater than zinc. That is why this is not possible. Yes, sir. Got it ना, Fadil? Yes, sir. अब Yes, sir. देखिए फिया बताएंगे, ये वाला फिया। Tell me what is getting reduced here? AG, sir. Ag, तो Ag का ज्यादा होगा Pb से। Tell me, आया ना? अरे बोलो फिया। Yes, sir. और आपने क्या लिखा है? I wrote ulta. I wrote the opposite, sir. Why did you write? According to the electrochemical series, Ag is in Chapa element and Pb is in रुखसती वाला वेडिंग एलिमेंट है, राइट? Yes, sir. तो क्या हो जाएगा बताएं? Ag So is this greater than, reaction can occur. हाँ क्या न कर रही। और अलीजा ऐसा शांत बैठी है, क्या हो गया? अलीजा नहीं है क्लास में? ओ, एक बार डिस्कनेक्ट कहाँ चली गई है? कहीं चलिए लिखे। अब कंफ्यूजन नहीं है ना किसी को? फादिल, सब क्लियर है? Yes, yes, sir. Yes, sir. ओके, एक बार लेकिन रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है ना? ओके, वो कभी स्टार्टिंग में अगर किसी टॉपिक में कुछ कंफ्यूजन ऐसे अटक के रह जाता है ना कहीं, वो फिर दोबारा बार बार आपको ना वो थोड़ा सा परेशान करेगा, तो इसको रिवाइज कर लीजिएगा एक बार फिर से। Yes, sir. ठीक है नाउ, ये जिसको आ गया ना, मतलब आपको बहुत सुकून रहेगा। आई मीन इफ यू नो हाउ टू प्रेडिक्ट पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन कैन अकर और नॉट, दिस इज द केसेस ऑफ मेटल, देन ये आप समझ कर कि आपकी केमिस्ट्री अब अच्छी होने लगी है, ठीक है। देयर आर मेनी, मतलब हम ऐसे लेवल्स जानते हैं केमिस्ट्री के। फर्स्ट लेवल इज व्हेन आई से, लेट अस सपोज इफ आई एम सेइंग मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है,
तो इवन 12वीं के बच्चों को ना मैग्नीशियम क्लोराइड में वो ये फंस जाएंगे। मैग्नीशियम क्लोराइड क्या होता है, वो बोलेंगे MgCl2। फिर आप बोलो सोडियम क्लोराइड क्या होता है, वो बोलेंगे NaCl2। लेकिन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं NaCl होता है, राइट? बट यू कैन गेट कंफ्यूज्ड हियर। सो दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ केमिस्ट्री। अगर आपको व्हेन आई एम सीइंग एनी आयनिक मॉलिक्यूल, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ब्रोमाइड, ठीक है, so this is one first level, the initial level, that you know how to write the chemical formula from the name of a particular compound. उसके बाद आएगा when you can write, if you can write the formula of the chemical compound looking at its name, जहां पे polyatomic ions आ जाए. For example, if I talk sodium sulfate, it is Na2SO4, but calcium sulfate, it is CaSO4. ठीक है? So when you are able to deal with polyatomic ions, वो याद करना पड़ेगा. There is मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं, conceptual है. You have to start to remember these things, that SO4 has 2 negative charge. Sodium की valency 1 होती है, then you cross multiply it and then you get Na2SO4. ठीक है? So these are the initial levels जो आपको आना चाहिए केमिस्ट्री के अंदर. और फिर थोड़ा सा आप 4th लेवल में हम बोल सकते हैं आपके पास कि if you are able to predict a particular reaction can occur or not. And this is something that has been taught in your 10th standard also, जब आपको रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाई गई थी, मेटल्स नॉन मेटल्स जब चैप्टर था ना 10th में, रिएक्टिव, यू हैड ना रिएक्टिविटी सीरीज, यस और नो? यस सर। उसमें कौन किसको डिस्प्लेस करेगा याद करो, ऐसे सवाल आते थे, है ना? So it is indirectly the same question. We have seen the displacing power right now also, and indirectly this is the same question. Can, इसमें आपके पास सवाल है, can Fe displace copper? हाँ, obviously कॉपर का कोई कंपाउंड होगा, राइट? There was some compound of copper, that is why we are adding Cu2+. Cu2+ ionic state it will never be available, right? You will have CuSO4, CuCl2. And then Fe is able to displace copper and form FeCl2 or FeSO4. ठीक है? So it is indirectly the same thing. This is very important. हाँ, इसके लिए देखिए, memorization is key for each and every subject. अगर आपको कोई ये बोल के परेशान करे कि केमिस्ट्री में बहुत रटना पड़ता है, वो लोग कौन सा सब्जेक्ट में नहीं रटना पड़ता है? जिनके पास है, बायो वाले तो छोड़ दो, बायो वालों को तो पूरा रटना ही पड़ता है. जिनके पास जो बोलते हैं ना मैथ्स के बारे में कि मैथ्स में नहीं रटना पड़ता है, आप उनसे ये कह दो, भाई एक बार बताओ 9 into 9 कितना होता है? इसके लिए भी उनको रटना ही पड़ेगा ना, है ना? इसके लिए भी उनको रटना पड़ेगा. तो रटने से प्लीज मत घबराइए, यू हैव टू मेमोराइज, ओके? प्लीज मत घबराइएगा. चलिए, लास्ट थिंग है आपके पास, वी हैव डन 4th, राइट? 4th, राइट? 5. अब ये भी आपके पास ऐसा सवाल है ना जो बिल्कुल बहुत परेशान करता है बच्चों को. आई मीन इट विल इरिटेट, दिस इज इरिटेटेड, मतलब बहुत इरिटेशन वाला सवाल है. प्रेडिक्ट वेदर अ मेटल कैन, प्लीज राइट, प्रेडिक्ट्स वेदर अ मेटल कैन, वेदर अ मेटल कैन liberate H2 gas, liberate H2 gas when added in acid. ठीक है? Okay. So for example, if I will add zinc on acid, then will it liberate hydrogen gas or not? If I add copper, if I add silver, if I add, so these are the questions that you have you. अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, if I have acid, then obviously acid will have H+ ions, right? And when H+ ion, they eat electron, they will become H2 gas. If I want to balance it, I will just write half H2. And the electrode potential for this particular reaction is equal to how much? Tell me guys, what is the electrode potential for this reaction? What is the electrode potential for this reaction? Oh my God. What is the electrode potential for this reaction? हाँ जी, बोलो, what is the value? किसी को नहीं पता? अरे भाई, पलटो नोट्स, पलटो भाई, नोट्स पलटो. 0. अरे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिएक्शन है ना, कल तो इतना पढ़ाया था लास्ट क्लास में. स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में किसका रिडक्शन है ना? स्टैंडर्ड इट इज देयर, सो इट इज 0 volts. Okay. Now, as soon as I add metal in water also, then it will get transformed into Mn positive. उसके ions बन जाते हैं. Okay, so when we have metal and acid, so the reduction of any one of them can take place, preferably.
अगर आपके पास m in n positive state है, it will take up n number of electrons and it will give you metal in a solid state. Now this reaction will have some kind of SRP. It will have some kind of SRP. ठीक है? Now if this SRP, ये SRP जो है आपके पास, ये तो zero होगा नहीं because it is obviously of a metal. So this SRP can either be positive or it can be negative. It is positive or negative. अच्छा, if it is positive, then it is greater than zero. Correct है guys? है ना? अरे बोलो. And if Yes, it is sir. negative, it is less than zero. That means I can say, if the SRP of metal is positive, it is having electrode potential higher than that of hydrogen, and that is why the reduction of metal will take place and hydrogen will not take place, because SRP इसकी reduction potential ज्यादा, अगर positive है तो metal की ज्यादा. हाइड्रोजन और मेटल में कंपेयर करना है आपने, किसमें कंपेयर करना है बोलेगा? इस हाइड्रोजन एंड बोलो H प्लस एंड मेटल. H प्लस इज पॉजिटिव, मेटल इज जीरो, तो किसका ज्यादा? SRP ऑफ मेटल, है ना? मेटल का क्या है? पॉजिटिव. और हाइड्रोजन का क्या है बोलो? फॉर हाइड्रोजन इट इज, हाइड्रोजन का कितना है SRP? बोलो भाई, जीरो. और मेटल का क्या ले रहे हैं हम? पॉजिटिव. पॉजिटिव. तो किसका रिडक्शन होगा? हाइड्रोजन. है हाइड्रोजन. मर जाए क्या हम? पढ़ लो तुम लोग, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. अरे यार, अरे ये लाइन पढ़े भाई. ये पिंक वाला जो हम लोग, ये क्या ना, इसी को पढ़े, समझ में आया? यस सर. एक ए एलिमेंट है, इसका है रिडक्शन पोटेंशियल 0 वोल्ट. एक बी एलिमेंट है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल है 5 वोल्ट. बताओ कौन ज्यादा रिड्यूस होना चाह रहा है? बोलो भाई. बी. Sir, B. बी ना? बी एवरीवन, यस और नो प्लीज टेल मी भाई. Yes, बी. sir. अरे Yes, sir. डेबोरा, यू Yes, sir. कीप योर माइक ऑन. डेबोरा, यू कीप योर माइक ऑन. पता नहीं क्या लिखते रहते हैं आप. ठीक है, देखिए इधर. अब बताओ ना, अगर मेटल का पॉजिटिव है तो मेटल रिड्यूस होगा, अगर मेटल का नेगेटिव है तो कौन रिड्यूस होगा? आदिल. हाइड्रोजन. हाइड्रोजन. हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है. मुझे लग रहा है ऐसी मुंडी ला रहे हैं बस आप. नहीं सर. समझ में आ रहा है? अपने आप को दिलासा देने के लिए कुछ बच्चे मुंडी लाते रहते हैं. हाँ भाई कुछ तो आ रहा है भाई, पॉजिटिव नेगेटिव हमको. अरे समझो ध्यान से, बहुत आसान है ना. अगर भाई जिसका SRP Yes, ज्यादा sir. उसका रिडक्शन होगा. हाइड्रोजन का तो जीरो है, तो मेटल का पॉजिटिव तो मेटल रिड्यूस, अगर मेटल का नेगेटिव तो हाइड्रोजन से कम हो गया तो हाइड्रोजन रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है, ध्यान से रखिए. देखिए, नाउ आई विल जस्ट राइट वेरी सिंपली स्पीकिंग. SRP जो होगी मेटल की, SRP ऑफ मेटल विल आइदर बी, लिखा देंगे. देखिए हम लिखा देते सारी चीजें, ऐसा नहीं कि समझा के छोड़ दिया आप लोग को. ठीक है, लिख लेंगे तो फिर आप लोग रिवाइज करने में आसान होगा. SRP ऑफ मेटल कैन बी पॉजिटिव, ठीक है, क्या ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, या कि क्या हो सकता है? नेगेटिव, लेस देन जीरो. अगर पॉजिटिव होगा दैट मींस हायर देन H प्लस, हायर देन H प्लस. ठीक है, therefore H plus plus electron gives H2. ये reaction will not be possible. Therefore this reaction, ये reaction, this reaction is not possible. बात समझ आ रही है? बोलो भाई. बादल. यस सर. Sir, can you repeat this point? ठीक है. मेटल का जो SRP है हाइड्रोजन से ज्यादा है, मेटल का SRP हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो मेटल रिड्यूस होगा, हाइड्रोजन रिड्यूस नहीं होगा. अगर हाइड्रोजन रिड्यूस नहीं होगा तो ये वाला रिएक्शन होगा ही नहीं. रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन ही तो है, H प्लस का रिडक्शन ही है ना. Got it? So this reaction will not occur. Yes, sir. And if the reaction is not occurring, अगर ये reaction क्या हो रहा है? If the reaction is not occurring, then H2 will not be liberated. अब बताओ, पॉजिटिव SRP किसका होता है? वेडिंग या छापा? छापा. छापा.
राइट। तो छापा एलिमेंट्स डोंट गिव, छापा एलिमेंट डोंट गिव H2 इन एसिड। ठीक है। अब नेगेटिव एसआरपी के बारे में जब हम बात करेंगे, तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, इट इज लेसर देन H प्लस। एसआरपी ऑफ H प्लस लिख देते हैं, आपको कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, एसआरपी ऑफ H प्लस। देयरफॉर द रिएक्शन H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग H2। हाँ जी, कुछ बोल रहे हैं बादल? नहीं सर, नहीं सर, गलती से अच्छा, नहीं। will occur. अच्छा अच्छा, the reaction H plus electron gives H2 will occur, and then H2 will be liberated. ठीक है। And what are the elements? Wedding elements, right? Wedding elements का नेगेटिव होता है SRP, so wedding elements है ना। आप ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का तो हम बोल रहे हैं ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बाद ना आप नोट्स दे दो ना, वो बच्चे फिर आपके आसपास वाले पागल होते रहे कि वेडिंग एलिमेंट क्या होता है भाई, है ना। वेडिंग एलिमेंट क्या होता है, हम कहाँ आ गए ये। वेडिंग एलिमेंट्स then H2 will be liberated. Wedding elements liberate, give H2 in acid. और भाई अपना मजाक उड़वाने के लिए एग्जाम में मत लिख के आ जाना ये, है ना। What type of elements or type of metal give H2 in the presence of acid? तो उसमें भाई तुमको लिखना पड़ेगा the metals which have negative SRP liberate हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। है वेडिंग एलिमेंट, है ना। मास्टर तुम्हारा स्कूल में मारेगा पड़े, बहुत तुमको शादी में जाने का शौक है। वेडिंग एलिमेंट्स। चलिए डन एवरीवन, छाप लिया तो बताएं। राइटिंग सर। राइटिंग, ओके। लेट रेज योर हैंड वंस यू आर डन, ठीक है ना। आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू डू लॉग, है ना। लॉग पता है आप लोगों को? लॉग पता है? लॉग पता है? लॉग मैथ्स वाला सर। मैथ्स वाला लॉग, जी जी जी, मैथ्स। लेकिन मैथ्स वाले लॉग, मैथ वाले ने कुछ लॉग पढ़ाया ही नहीं होगा, वो उन्होंने प्रॉपर्टीज पढ़ाई होगी कुछ बस आप लोगों को, राइट। सो आई हैव टू टीच यू गाइस हाउ टू सॉल्व फॉर लॉग। जैसे एक जिम्मेदारी दे दी जाती है फिजिक्स के टीचरों को कि मैथ्स वाले क्या ही डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सिखाएंगे, फिजिक्स के टीचर सिखाते हैं, राइट, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन जनरली। उसी तरह से केमिस्ट्री में एटलीस्ट लॉग हमको सिखाना पड़ेगा आप लोगों को। क्रिकेट देखते हैं फादिल आप? कम सर। कम देखते हैं, ये हमने पहले भी पूछा है क्या आपसे? यार मेरा दिमाग जो है ना वो गोल्ड फिश के बराबर है, ठीक है ना। तो हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं चीजें, और खासतौर से मतलब जो चीजें काम नहीं आती है ना उनको हम तुरंत भूल जाते हैं। क्यों सर? तो मेरे कंट्रोल में होता है, क्यों बोलते हैं तब तो फिर क्या ही बात नहीं नहीं थी। सर, आई आस्किंग व्हाई आर यू आस्किंग क्रिकेट का। अच्छा, क्रिकेट के बारे में? नहीं नहीं, वर्ल्ड कप चल रहा है ना। हाँ, डैड वॉचेस। So may I know why you asking only him? Why am I asking? Only him? नहीं ऐसा नहीं है, हम किससे भी पूछ सकते थे। Okay. ये लास्ट में यही बात कर रहे थे। आप देखते रहे था Yes, माय sir. फेवरेट स्टूडेंट। इससे ही ये फेवरेट स्टूडेंट है। अरे ये आता नहीं है ना क्लास में, इसलिए इसे पूछ रहे हैं हम। आज आया, ये पूरी क्लास पहली बार अटेंड कर रहा है ये। आप देखते रजिता? Yes, sir. That's why I asked. रजिता, रजिता इज लाइक दैट। आप लोगों ने वो देखा है, क्या नाम है उसका, चुप चुप के एक मूवी है, यस सर। चुप चुप के, उसमें है वो, क्या नाम है उसका, राजपाल यादव। यस सर। मैं करूंगा, मुझे सब आता है, मैं भी देखती हूँ No, क्रिकेट। no, sir. It's just you. No. नहीं नहीं नहीं, आई एम जस्ट जोकिंग। तो क्रिकेट वर्ल्ड कप देख रहे हैं आप अभी? Yes, sir. अच्छा, आप लोग 12th में हैं, सो
2015 का जब वर्ल्ड कप हो रहा था, आई वॉज इन 12th स्टैंडर्ड, एंड उस टाइम 2015 में जो वर्ल्ड कप हुआ था दैट वाज इन मार्च में हुआ था शायद। पूरे बोर्ड्स में वर्ल्ड कप चल रहा था। इट वाज बट अगर हम घर पे होते तब तो नहीं देखने दिया जाता, बट आई वाज इन हॉस्टल, तो वहां पे लड़के तो छोड़ते नहीं थे किसी को। मतलब अगर वो कोई ये नहीं, कॉमर्स का कल एग्जाम नहीं है कॉमर्स वालों का, साइंस वालों का कल एग्जाम है, लेकिन कॉमर्स वाले उठा के लेके जाएंगे साइंस वालों को, नहीं मैथ्स तो देखना, मैथ्स क्या नहीं देखना, मैथ्स तो देखना है। ये जबरदस्ती सिर्फ लड़कों में ही होती है आई थिंक। गर्ल्स जनरली दे लीव, मतलब आई हैव, बहन के पास फोन आता है, बहन अपने दोस्तों को बोलती है हम बिजी हैं थोड़ा सा, एंड नोबडी आस्क्स। अगर आई एंड माय ब्रदर वी टॉक, तो उसको बोलेंगे ना बिजी है, हाँ बहुत बड़का बिजी हो, बेगारी का बिजी हो खाली। they will just roast us and tell that why are you busy, बिना काम धाम के बिजी। I think Yeah, that's done why I everyone? spoke out. Sorry, what, Rajita? No, I think that's why I spoke out. I was like, I thought you were asking him because he's the only boy here. अच्छा नहीं, I am just asking ऐसे ही। There's Done, sir. Done everyone? Okay. Even I mean we can ask that, because really at least like none of our mom would watch cricket, right? Mostly my mom speaking. does. My dad doesn't. My mom does. But like largely speaking, it doesn't happen really. But like if you talk about Indian fans, they watch cricket, and also like that's the first sport that generally we play in India, and we play till a very late ages also. Like even if someone is 50 and all, वो आते जाते देखेंगे बच्चे अगर गली में क्रिकेट खेल रहे हैं तो वो बोलेंगे भाई ये बॉल खिला दो, है ना? So that is why. Sir, I So you apologize watch? if I offended you. No, I didn't. By the way, you tell me, do you watch men's cricket or women cricket also? So I only watch men's cricket. I don't watch women's cricket. Why you don't watch? This is getting very. I feel like I dug my own grave here. I'm just joking. Like we can have No, this I conversations and we can. I understand. See, let us have log. लॉगरिथम्स, ठीक है। तो लॉगरिथम्स के बारे में देखिए, बिल्कुल बेसिक, ठीक है ना? बेसिक मतलब इतना बेसिक कि आप लोग ये थॉट कहां से आया कि लॉगरिथम होना चाहिए, ठीक है? व्हाट वाज द यूज, मतलब ये थॉट आया कहां से कि लॉगरिथम्स भी होना चाहिए? तो बेसिक एक फंडा है मैथ्स में दैट इफ वी हैव टू टर्म्स, जैसे 2 + 3 विल बी इक्वल टू हाउ मच? बोले गाइस, ये ट्रिक क्वेश्चन नहीं है, जवाब दे सकते हैं। 5, ठीक है। So what are we doing actually here? We are representing 5 in terms of 2 and 3, correct है? ठीक है। Yes, sir. Now similarly, I can represent 3 using the other two numbers, right? I can write 5 minus 2 will be equal to 3, correct? Yes, sir. Similarly, I can represent 2 using 5 and 3, correct है? Is there any other way, or is there any other equations that we can write using these 3 to represent each other? Not a new number, by the way, है ना? ऐसा नहीं कि 5/3 करते, 5/3 करते हैं आप और फिर नया नंबर। Using 2, 3 and 5 only, these are the only 3 equations that are possible, correct? Yes, sir. No. So ठीक है। Now what happens, like मैथ्स को धीरे धीरे फॉर्मुलाइज किया गया। तो पहले मैथ्स किस लिए यूज होता था? पहले मैथ्स, सबसे पहले बताइए मैथ्स किस लिए यूज होता था? मैथ वाज यूज्ड ओनली टू काउंट द नंबर ऑफ शीप्स यू हैड, राइट? है ना? मतलब हमारे Yes. उससे पहले, उसके बाद धीरे धीरे फॉर्मुलाइज हुआ ना मैथ्स तो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, दैट इज व्हाई देन द मैथमेटिशियंस दे सेड दैट सो व्हाट वी वुड डू इन ऑर्डर टू बी कंसिस्टेंट
if a number is represented by two numbers, then we should have at least, जब 3 numbers आ जाते हैं, 3 number के बीच में कुछ ना कुछ relation है, तो तीनों को represent होना चाहिए किसी ना किसी form में. So if I have something like this, 10 to the power 2 is equal to 100. So what I am doing here, I am representing 100 using two numbers, 10 and 2. समझ में आ रही है ना? Yes, sir. अब देखिए, I can represent 10 using the other two numbers. This is square root generally बोलते हैं, but I think this 2 is also there, जो दिखता नहीं है आप लोगों को. करेक्ट है इसी सुनो, ये 2 तो Yes, यहाँ sir. पे होता है, बट वो जनरली लिखा जाता है. क्यूब रूट में इसको स्पेसिफाई एक्सप्लिसिटली लिखना पड़ता है, otherwise we don't write. Can you see that I have again used two numbers, 100 and 2, to represent 10? Now there should be a way to represent what? Tell me. To represent क्या बचा? 2. 2 using what? Log. हाँ बताइए या फिर टेल मी. No, sir. No, nothing. अच्छा ठीक है. So 2 is a way to represent what? 100 and 10 using something, right? Using some operation. जैसे operation यहाँ change हुआ ना, तो using plus minus, तो operation आप change कर सकते हैं, but numbers are same. So now what is log? It is basically, see, एक तो log में base होता है, that is represent, जो यहाँ पे generally लिखा नहीं रहता है. There is a base. It is what it is saying. It is just giving you the relationship between the squares and everything. है ना, जो powers वाला relationship है. 10 to the power 2 is equal to 100. That is log, nothing else. All of you understood this? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. ठीक है, रचिता, got this? ठीक है. Now this is it. Log के बारे में आपने अगर इतना समझ लिया, तो अब देखिए यहाँ से बहुत आसानी से आपके पास. If I ask what is log of 1000, so basically what I am asking कि 10 के पावर में हम क्या रखें? What should be the power of 10 to get 1000? Please ask this in your head also, है ना? 3. Okay, now tell me, log of 1 upon 1000 अगर है, then 10 का पावर हम क्या रखें कि 1 upon 1000 आ जाए? Now this seems difficult, but it will get very easy if you convert this ना. ये इसको क्या करें आप? You try to put this in powers और उसको ऊपर ले जाए. So I can write this as 1 upon 10 to the power 3. Correct है? अरे बोलो भाई. Yes, sir. Yes, sir. And I Yes, can write this as was log of 10 to the power minus 3b. अब ये देखिए आप 10 का पावर में हम क्या रखें तो minus 10 to the power minus 3 आ जाए, बताइए. -3. Minus 3. You got it? Yes or no? Please tell me, all of you guys. समझ में आ रहा है Yes, क्या है sir. log? Yes, sir. ठीक है. Now as you can see, अब देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पे ये करते हैं, आप लोग को यहाँ से चीज समझ में आएगी. Look at this part. ठीक है, इसका आंसर आपने खुद दिया है. Now I am going to just analyze it a bit. Log of 10 will be equal to how much? अगर 10 base है तो 10 to the power how much will be equal to 10? 1. 1. ठीक है. अच्छा, if I write -3 into 1, क्या कोई दिक्कत है? Into 1, which is equal to log of 10 to the power -3. ऐसे ही थोड़ा सा मेरे से गलती हो गई. If I have log of 10 to the power, sorry, 10 to the power -3, this will be equal to -3 into 1. Into 1 करने से कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? No, sir. अरे बोलो नहीं ना? It will be same thing. और 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? log 10. वन की जगह log 10 लिख सकते हैं ना, बिकॉज log 10 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है ना? अब देखिए, कैन यू Yes, सी sir. व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग? -3 जो है उतर के नीचे आ जा रहा है, राइट? कैन यू सी दैट? है ना? Yes. क्या हो रहा है? व्हाट यू आर गेटिंग? -3 ऊपर के नीचे आ गया, -3 into log 10. तो यहीं से इसी तरह से देयर आर सम रूल्स. नो फियर, आई विल टेल यू व्हाट यू हैव टू राइट. ठीक है, डोंट वरी. देयर आर सम रूल्स दैट दे हैव गॉट. तो यहाँ पे आप लोग लिखिए, लॉगरिथम आपने लिखा है जो है, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखिएगा लॉगरिथम में, हम आपको बताते हैं. सबसे पहले बस आप एक चीज लिखिए, log of 100. यहाँ पे ये बेस होता है, this is equal to 2, and 10 to the power 2, it is equal to 100. You will make this and then you will write rules या laws, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, laws for law. There are a few rules. सबसे पहला log of a into b, log of
a into b, इस तरह से अगर आपके पास है, will be equal to log of a plus log of b. Similarly, if you have log of a by b will be equal to log of a minus log of b. Thirdly, if you have log of a to the power b, this will be equal to b times log a. Then if I have log of 1 upon a, this will be equal to minus log of a. So these are the basic rules for log that you have to memorize. अब देखिए, इसमें थोड़ा सा अगर आपने एक्सप्लेन करने के लिए हमसे कहा तो इसको एक्सप्लेन बहुत आसानी से किया जा सकता है विदाउट इवन लुकिंग एट द रूल्स. ठीक है, लेट मी नो वंस यू हैव रिटन. थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे. Done writing? Yes, sir. Are you done Yes, sir. writing? ठीक है, देखिए. ये कितना हो जाएगा बताइए जरा. This will be equal to 4. 4, sir. 4. This is equal to 4. Log Four. 100 minus. माइनस माइनस क्यों कर. ये आपको रूल्स नहीं यूज करना है, बेसिक आपको यूज करना है. ठीक है ना, बेसिक में ये वाला बस. ठीक है ना. तो log 100 plus log 100, log 100 कितना होता है? 2, 2 plus 2 4. ठीक है, that means log of 1 2 3 4 0 will be equal to log of 100 plus log of 100. And what is this log of? ये जो है ना आपके पास, ये कितना हो जाएगा? 100 into 100 है कि नहीं, is equal to log of 100 into plus log of 100. देखिए, है ना. कैन यू सी? देखिए, हमने पहले क्या बोला, ये कितना होगा? 4 होगा. log 100 और log 100 भी 4 होगा. दैट मींस दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू आर सेम. नाउ वी गॉट अ रिलेशनशिप. log जो आपके पास यहाँ पे क्या था? 10,000 था. आई कैन राइट इट एज 100 into 100. You can see this is a, this is b. क्या हो गया? log a plus log b. Can you see that? Yes or no? Please tell me. अरे बोलो भाई. Yes, sir. ठीक है. अब इसी sir. एग्जांपल से, ठीक है, इसी एग्जांपल से और एक चीज देख लीजिए. What is log of 10 to the power 4? It is equal to 4 log 10. 4. नहीं, यूज पावर वाला यूज नहीं करना. 10 का पावर हम क्या रखे तो 10 टू दी पावर 4 हो जाए, वैसा वाला यूज करो. 4 4. 4. 4 उससे 4 आ रहा है ना. 1000 कौन 1000 बोल रहा है? फिया कहाँ है आप? Sir, this concept is confusing. Why it is confusing? आपको इधर ये लॉस नहीं देखना है. 10 टू दी पावर हाउ मच विल बी इक्वल टू, बोलो क्या पूछ रहे हैं हम? 4. ये ऐसे कर, हाँ ऐसे करके ये साइन होता है, ऐसे बोलो. टॉक इट आउट लाइक हाउ आई यूज्ड टू से ना, 10 टू दी पावर 4 इज विल बी इक्वल टू इतना. उस तरह से बोले जरा. से इट 10 to the बोलो. power 4 is इक्वल टू 4. 10 टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 4 कैसे होगा? Log of 10 to the power 4 is नहीं, equal वैसे बोलना ही नहीं है, वही तो दिक्कत कर रहे हैं आप. वहां से स्टार्ट ही नहीं करनी है. लॉग कुछ नहीं है ना. लॉग का जो बेस होता है ऐसे याद याद बेस से स्टार्ट करेंगे. 10 टू दी पावर 2 इज इक्वल टू 100. ठीक है, चलिए. अच्छा चलिए फिया आपको हम एक दो सवाल करा देते हैं, फिर आपका हो जाएगा. ठीक है फिया, to. Yes. चलिए. दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? ये द बेस इज 10. 4, sir. 3, sir. Why 3? Because 3, 10 to the power 3 will be equal to 1000. ठीक है. Yes, sir. क्या हो जाएगा इसका? 4, sir. कोई दिक्कत नहीं है ना, तो क्या कंफ्यूजन? कुछ कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है आपका कंसेप्ट. चलिए थोड़ी इधर आइए. As you said, yeah,
log of 10 to the power 4 will be equal to how much? 4 है ना, ये 10 है यहाँ पे, ठीक है? फिया बोलो, जल्दी बोलो, हाँ या ना, yes or no, फिया tell me. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. yes, okay, okay. देखिए यहाँ पे 4 को हम क्या लिख सकते हैं, that 4 into 1 and this will be equal to 4 times log 10 है ना, 1 की वैल्यू क्या होता है, log 10, because 10 to the power 1 will be equal to log 10. So I can write this as this is the same thing. उससे भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो देखो, उससे भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सुनो जरा, ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए जरा, log of 10 to the power क्या जाएगा, 10 into 10 into 10 into 10, सही है? इसके लिए हम पुराना अगर log का वैल्यू यूज करें, 10 log 10 plus log 10 plus log 10 plus log 10 which will be equal to 4 times log 10. अरे बोलो, करेक्ट है फिया, समझ में आया ये, Yes, sir. है ना? So Yes, this is sir. showing you So what we this need is. to write this. कुछ अभी आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको ये रूल्स लिखने हैं, बस रूल्स फॉर लॉग लिखने हैं आपने, रूल्स स्लैश लॉस फॉर लॉग, Yes, sir. बस काफी है। अब आपको क्या लिखना है वो हम बताते हैं। सी देयर आर फ्यू लॉग वैल्यूज दैट यू हैव टू रिमेंबर। आपको याद करना है log 2 which will be equal to 0.3 approximately equal to, ठीक है ना, इसका बस लंबा सा आता है, approximately equal to 0.3 that you have to log 3 which will be equal to 0.48. You will write it as I am writing, ठीक है ना, उसमें से कुछ ऊपर नीचे नहीं कीजिएगा, ऐसा नहीं log 2 या तो log 3 यहाँ लिख दिया आपने, ठीक है, write it as I am writing. log 2 के बगल में आप लिखिएगा log 5 which is equal to 0.7. log 5 is equal to 0.7 and log 7 is equal to 0.84. Clear है? आपको you have to memorize these 4 log, उसके बाद आपको सारा कुछ हो जाएगा. You don't have to memorize any other log values, okay? But you have to memorize these 4 log values: log 2, log 3, log 5 and log 7. It's very easy. आप ऐसे लिख लीजिए, log 2, log 3, log 4, sorry, log 5 and log 7 ऐसे लिख लीजिएगा. 2 के लिए 3 देख लीजिए 0.3, 5 के लिए 7 देख लीजिए 0.7. अरे बोलो भाई, फिर दिक्कत किसी को No, नहीं sir. ना? Yes, sir. अच्छा ये बताओ, Yes. नीचे के लिए क्या करना, नीचे के लिए क्या करना, नीचे के लिए ध्यान दो. log 3 का बस आपको याद रखना है. 3 के बाद क्या था बोलो, 3 के बाद 4, 4 और 7 के बाद 8. खत्म. और 7 के लिए बस इसको उल्टा कर लो 0.84. 10 बार करो बैठ के, एक पेज के अंदर इसको याद हो जाएगा, ठीक है. मतलब आपके पास कोई और, देखिए दूसरा चीज ये कि आप दुआ करते रहें कि लॉग की वैल्यू आ जाए, लॉग की वैल्यू दे दे सवाल में जहां यूज हो रहा है लॉग. बट समटाइम्स अपेरेंटली व्हाट हैपेंस ना, कि व्हेन यू लुक एट अ क्वेश्चन जनरली, देखिए आप लोग होमवर्क क्या करते हैं बताइए, व्हेन डू यू डू दी होमवर्क? कल अगर शो करना है आपको तो कब कीजिएगा होमवर्क? रात मतलब एक दिन पहले। एक दिन पहले. तो जब सीबीएसई के जो जिनको भी उन्होंने काम दिया रहता है ना क्वेश्चन पेपर बनाने का, तो जो डेडलाइन रहता है वो लोग भी कब बनाते हैं पेपर? एक दिन कब बनाते पहले. हैं? एक दिन पहले ना. दिस इज ह्यूमन टेंडेंसी, यू कैन नॉट, मतलब यू कैन नॉट चेंज इट एट ऑल. आप आज से नहीं 12 साल से पढ़ रहे हो ना, यू आर अ प्रोफेशनल स्टूडेंट. कोई आदमी 12 साल अगर पढ़ा है, उनको 12 साल नहीं हुए पढ़ाते हुए, राइट? आप अगर 12 साल से पढ़ रहे हो तो यू आर अ प्रोफेशनल स्टूडेंट, और ये हाल है आपका, है ना, कि अभी भी एक दिन पहले. सिमिलरली स्पीकिंग, जो भी क्वेश्चन बना रहा है, जितना भी एक्सपीरियंस हो जाए उसको, आप कॉलेज में आओगे वही काम करोगे आप, ठीक है ना. आप ऑफिस में चले जाओगे, डेडलाइन जब है उससे एक दिन पहले प्रेजेंटेशन बन रहा है, ठीक है. सो दिस इज ह्यूमन टेंडेंसी. समटाइम्स व्हाट हैपेंस अपेरेंटली, जब इफ यू आर रीडिंग अ क्वेश्चन और सेलेक्टिंग अ क्वेश्चन, यू कैन नॉट रियली डिसाइड, मतलब आपको शायद समझ ना आए उस टाइम हड़बड़ में कि लॉग, is there any requirement of log values or no requirement of log values? So in some cases the CBSE they do not give, and you cannot even ask them, ठीक है, that no give me log values. They will not give you log values, they will give you log table. फिर आप ऐसा पागल हो जाएंगे log table को देख के कि क्या पता है ना. I really don't know how to use that log table. उससे बेहतर हमको लगा कि I should devise a method जिससे हमारे थोड़ी सी मेहनत में ज्यादा हमारे पास आउटपुट आ जाए. So you will remember these 4 log values. अब देखिए बहुत ही आसानी से, अच्छा चलिए एक आप बताइए, log 1 will be equal to how much? 10 to the power how much will be equal to 1? That is the question. 0. देखिए कितना आसान है ना. 10 to the power 0 will be equal to 1. Then log 2, you have remembered this is 0.3. 0.0. Log, sorry what? 0. Log 3 will be 0.48.
Now, log 4 can be written as log of 2 into 2 or 2 square, whatever you want to write, you can write it. And whatever log rule you can apply it. 2 into 2, तो क्या हो जाएगा log 2 plus log 2, which will be equal to 0.3 plus 0.3 will be equal to 0.6. Yes or no, please tell me. Yes, sir. You got the value of log 4. Log 4 bhi aa gaya. Now, log 5, you have already memorized that it is equal to 0.7. And for log 6, you can use prime factorization and write it as log 2 into 3, which will be equal to log 2 plus log 3. And this log 2 is 0.3, log 3 is 0.48. You have 0.78. Got it. Similarly, log 7, you have memorized that it is equal to 0.84. For log 8, you need to do log of, you can write 4 into 2, है ना? Log 4 into log 2, or you can write 2 ka cube also, right? So this is much easier. 2 times of log 2. Log 2 is equal to 2 times of, sorry, my bad, not 2 times, 3 times. 3 times of log 2, right? Power rule jo hai aapka. So 2 times of 0.3 will, sorry, my bad, 3 times of 0.3. 3 times of 0.3 will be equal to 0.9. Now we have log 9. Log 9 will be equal to log of 3 into 3, which will be equal to log 3 plus log 3, which will be equal to how much? 0.48 plus 0.48. 90, 90 और 3, 96. 0.96. ठीक है guys, ये सुनो प्लीज tell me. Yes, sir. आप बताइए log 10 आ जाएगा. log 10 कितना होगा? बोलो क्या करें log 10 के लिए? log 1. 5 into 2. 5 into 2. अरे 10 to the power 1 is equal to 5 into 2. 10 to the power 1. है ना अलीजा? अलीजा बोल रहे थे ना? Yes, sir. 5 into 2 कौन बोल रहा था? हाँ, फ्लो में आ गया. चलिए ठीक है. छापिए इसको, छापना है. आदि समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. ठीक है. Sir, is log 6 correct? सिर्फ मुझसे मत पूछिए sir. Sorry, what? Rajit Fadil? Sir, I'm saying don't just ask me, sir. वरना फिर से. No, listen to me. The cricket. No, sir. I didn't mean it that way. What are you saying, Rajita? No, sir. Is log 6 correct over here? What we did? Yes, sir. नहीं है क्या correct? 2 plus 3 होगा ना, log 2 plus log 3. Yes, sir. So that would be 0.48 plus 0.3. 4 3 7 0.78 तो होगा. आप डरा क्यों रहे हैं भाई? कैलकुलेट कर लो यार. 0 एक सेकंड. रजिता सही है, रजिता सही है. क्या हो गया? 0.2 is how much? 0.3 plus 0.48, right? If you add this, it will be 0.78, na?
Done, sir. Everyone done? Yes. Yes. Yes, sir. Okay, those who are done, they will calculate these log values, log 12, and then you will calculate log 15, maybe calculate log 18. ठीक है, calculate these log values. उसके बाद these are easy ones, ठीक है ना, prime numbers नहीं है ये, ठीक है, prime numbers का आपको याद करना पड़ेगा because prime numbers cannot be factorized, right? But prime numbers above 10, इसका हम आपको एक ट्रिक बताएंगे कैसे करना है आपको. 12, 15 and 18, these are not prime, so you have to prime factorize it, जैसे हम log 6 के लिए किया था, ठीक है. So you will write 12 as 2 into 6 कर दीजिए आप. So you will just have to do log 2 plus log 6 and all. Done, sir. अच्छा, Deborah, you can leave, but just do the assessment, okay? Okay, Deborah? Yes, sir. Yeah, you can leave. It's almost time. Do the Sir, assessment in can your you phone, maybe. tell the values? What values? Log 12, 15, 18. Actually, just let me see. Gachita, what you have done? So this is your log. I was wondering what is this? Were we not supposed to send it? No, you have to send it to me. But actually, see, I am accustomed of looking at log in lower cases, right? Or आपने ऐसे लिखा है, it seems like you have 10, then you have 6, something like that. Oh, I understood it. I yes. understood it. Log 6. Yeah. And this 1.8, and you have what is hiding? 3.26. Okay. Fia, Sapia. 08. I think all of you are correct, maybe. But सबके आंसर सेम आ रहे हैं. यार, how you have added Fadil? ये आप इतना एक तो हम अप्रोक्सीमेशन करके दे रहे हैं आपको, और आपने इसका भी अप्रोक्सीमेशन कर दिया, 0.7 ले लिया आपने log 6 को. हाँ फादल, कैसे चलेगा? Oh, I didn't see it. ठीक है. So it is, I think, how much? 1.08 है पहले वाले में, then you have 1.18 and I think 1.26 आ रहा है आपको, correct? Those who have done. Yes, sir. Yes, आपका ये कहाँ आ रहा है? आपका तो कुछ और ही आ रहा है. Sir, I didn't see. मैंने सबको अप्रॉक्स ले लिया. क्यों अप्रॉक्स लिया आपने? दो डेसिमल पॉइंट, मतलब डेसिमल के पॉइंट के बाद 2 डिजिट तो एटलीस्ट रहने चाहिए, अदरवाइज इट विल बी रॉन्ग.
See, using the calculator, it is coming as for log 12. The exact value is coming at 1.079. ठीक है, तो obviously 1.08 is correct, है ना? Because we are not calculators. Log 2 की जो value it is, I think it is an irrational number. It just continues like this. ठीक है, it continues like this. You cannot remember all of those values, right? So we have to approximate somehow. So then for log 15, we are getting 0.176. This is exactly a 1.176. So approximately 1.18. And then we have log of 18. This is 1.25527. So it is greater than 5. So obviously 0.26. Okay. Now, let us suppose you are having log 11. What to do with log 11, right? Log 11. See, this is another prime number. So what you will take the average between the log before it and the log after it. So before 11, we have 10. So log 10 plus log 12. Calculate करके आप इसको by 2 कर दीजिए. So what is log 10? It is 1. What is log 12? It is 1.08. So divide by 2. So this will be 2.08 divided by 2, which will be equal to 1.04. Is that clear? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Yes, sir. Okay. And even if you use the calculator for log 11, it is equal to 0.0413 like this. Okay. So if you get any log like this, which is very difficult to calculate. For example, if you are getting log of 19. So what you will do? You will do log of 18 and log of 20. We'll add both of these terms and then divide it by 2. Okay? So that's how. Now, if अब देखिए हम सारी चीजें बता दे रहे हैं आप लोगों को. If you don't have any time, आपके पास अगर time बहुत कम है, so now let us look at a pattern here, guys. Okay. So what is the difference between log 2 and 3? Difference कितना है दोनों में? 0.18 का, correct? है ना? Can you see Yes. this or no? Yes. The difference between 0.3 है ना? And 4.8 से 0.6 तक का कितना difference है? क्या difference है यहाँ पे? This is 0.18. Log 3 से log 4 में कितना है? 0.12. Correct? है ना? Yes, sir. 4.8 और 0. Yes. अच्छा 0.6 से 0.7 में 0.1 का difference है, right? Yes, sir. Okay. Log 7 से log 6 में 0.8 का difference, 0.8 का difference है, right? Correct. Yes, sir. From here to here you have 0.06. From 0.84 to here again we have 0.06. And here again we have 0.06. And here we have 0.04. Correct. We have 0.04. As you can see, tell me, log 9, it is nearer to 10 or 8? Log 9 जो है किससे ज्यादा नजदीक है? Eight. Log 8 से कैसे ज्यादा नजदीक है? Log 10 से ज्यादा नजदीक है ना? देखिए अगर 9 से आप 8 जाइएगा, you have to do 0.6 आपको कम करना पड़ेगा, right? Aliza, Yes, here sir. it is 0. है ना? So अच्छा, now if you Yes, got it ना, तो log 9 जो है log 10 की वैल्यू से ज्यादा करीब है. So if you have a very weird type of log आपको दे दिया, उन्होंने log 39 दे, ठीक है, log 39. Now this is weird, why? You know, आप इसको पहले क्या कीजिएगा? आप इसका क्या लीजिएगा? log लीजिएगा किसका? You would take log of 38 and 40 और इसका एवरेज करने की कोशिश कीजिएगा, right? But again, if you look at 38, 38 is 2 into 90 and 19 is again a what? Prime number, है ना? तो 19 का फिर से आपको याद तो नहीं है. For 19 what you would do? आप 18 और 20 कीजिएगा and then so it will become very heavy, like बहुत ज्यादा difficult हो जाएगा. So आप log 39 अगर आपको दिया हुआ है, so now you need to just say that it is log 40. कुछ नहीं करना इसमें, ठीक है? If you are going to approximate, you will approximate to the next value, उससे पहले वाला वैल्यू. और आप ये चीज आप करके देख लीजिए कैलकुलेटर में अपने. To take log 39. If you take log 39, this is coming as 1.59. ठीक है? And if I take log 40, एक और वैल्यू 39 कितना है? 15910. ठीक है, इस तरह से आ रहा. And for log 38 देख लेते हैं. Log of 38. So if log of 38 you see it is 1.579. ठीक है? And what is log of 40? This is equal to 1.602. अब बताइए कौन सा ज्यादा नजदीक है? You will approximate 1.59 as this is better or this is better? 1.60 is better. Tell me. 1.6.
1.60 राइट. सो जब भी आपके पास कुछ इस तरह का कंफ्यूजन है, then you will take the next number जो कि यहाँ पे easily calculatable होना चाहिए. It should be easily calculatable, and then you will take that as log. So this is extreme case when you don't have time and the log value is very big. ठीक है. So I hope अब you will never be stuck in log, right? ठीक है. और the next class we are going to deal with log also ना. That is why I have taught this. देखिए इस तरह के log से आपको डील करना पड़ेगा. 10 to the power minus 3 divided by 10 to the power 2. So if you have to deal with this type of log ना, तो सबसे पहले you will simplify the fraction. 10 to the power minus 3 into 10 to the power minus 2. So it will be equal to 10 to the power minus 5. Correct? है ना? So Yes, we will sir. write log of 10 to the power